Hello students, the question is the motion of an airplane is represented by velocity time graph as shown below. The distance covered by airplane in the first 30.5 seconds is dash kilometers. Option 1 9, option 2 6, option 3 3 and option 4 12. So the problem is based on the topic kinematics, and the basic concept to solve this particular problem is that the displacement of the object is basically the area under the velocity time graph. And in this particular case, nothing has been said that whether the plane is changing its direction or so. So we assume that the magnitude of the displacement is the distance covered. So that's why we have to find out the area. Now this particular area OBACDO we have to calculate. Now to calculate this area, we can subdivide this geometrical shape into two sections. So for example, this point is E. So we have to find out the area, the total area. We have to find out the total area, which is equal to the area under this trapezium, OBAEO, and this rectangle ACDEA. So we have to find out these areas. So area 1, which is the area of trapezium, the trapezium denoted as OBAEO, plus second area, which is the rectangle. So rectangle, which is ACDEA. So we have to find out these areas. Now the area of trapezium is given by the sum of the parallel sides and the perpendicular distance between them. So the parallel sides are OB and AE. So half into sum of parallel side according to the formula of the area of trapezium. So half into OB plus AE multiplied by the distance between them, which is equal to OE, then plus area of the rectangle. Area of the rectangle is given by ED, this distance, multiplied by AE or CD, whichever you can write. So this is ED into AE. So half into OB. OB is basically 200. This is 200, and AE is 400. AE is 400. Then OE. OE is 0 to 2 seconds, which is equal to 2 seconds. So 2 plus ED. ED is the distance basically on the time axis. So it is equal to 30.5 seconds minus 2 seconds. So this comes out to be 28.5 seconds. Now this is multiplied by AE. Now AE is equal to 400. So we have to put this value as 400 here. So now solving this, 2 cancels with this 2. So we get this value as 600. Then plus, now multiplying this. So it is basically 285 multiplied by 40, which is equal to 11400 meters. So this added with 600, it becomes 12,000 meters, which is equal to 12 kilometers. So 12 kilometer is the answer. So option 4 is correct here. तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम पूछी गई है, जिसमें कि हमें मोशन दिया गया है कि एयरप्लेन का, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका दिया हुआ है इस फिगर में. हमें बताना है डिस्टेंस जो वो कवर करेगा फर्स्ट 30.5 सेकेंड में किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करनी है. तो इसके लिए जो कंसेप्ट यूज़ किया जाना है वो ये है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसमें अगर हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, जिसके के लिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो हम उस एरिया से उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है एयरप्लेन की कोई डायरेक्शन चेंज के बारे में सच, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस के तौर पे ले सकते हैं. यानी हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उसको डिस्टेंस के बराबर रख देना है इस केस में. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये डायग्राम, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया सकता है. पहला सेक्शन OBAEO जो कि एक ट्रिपेजियम है, फिर दूसरा सेक्शन है इसका ACDEA जो कि एक रेक्टेंगल है. इन दोनों के एरियाज़ को हम एडअप कर सकते हैं. सो ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. उसके अकॉर्डिंगली हम रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ उस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे. रेक्टेंगल की लेंथ के लिए हम 30.5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो इस तरह से हमारी लेंथ आ जाएगी और इसकी विड्थ जो आ जाएगी 400 आ जाएगी। इस तरह से सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद रिजल्ट आता है 12,000 मीटर्स, जो कि किलोमीटर में बराबर होगा 12 किलोमीटर के। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। So this is the whole explanation of this problem. Hope you understand it. Thank you.